Ladies and gentlemen, today we have a technical topic which is conditionals. So, in this topic, we will keep in mind that we are making conditionals. So, when we make conditional conditions, there are different structure of language which we have to apply. Thus, this is a technical subject and a technical topic. Grammar is always technical, but some topics are highly technical, where you have to follow a particular structure. Conditionals, as we don't use it usually, that's why we have problems with the conditionals. Generally, we don't use conditionals, that's why we face problems while using conditionals in our sentences. Conditional, that is part of the advanced English, and when you are able to use conditionals, it means that you are at advanced stage of English, because conditionals represent situations which are complex. Now, we can write simply that what is my name, what I am doing, and we can describe some simple things like table, chair, my school, my village. So that is the beginning level. Can you describe your village? Can you describe your father, your mother, your teacher? Can you tell us about your studies? So we usually say things in a usual way. But when it comes to complicated situations, then our language is not so advanced. But in life, sometimes we have to describe complicated situations, like what is the purpose of life, what is the nature of the relationship between China and USA, what are the secrets of success, if I do this, so what I will get. And then we make hypotheses, we make theories, we make regrets, and we do things, our inside feelings, then we cannot describe easily. That's why in language you have to go from simple towards complicated. You are able to write simple things, but you may not be able to write complicated things. So always do different and difficult situations. Improve your level. Go to another level. You have to go up so that you don't write and you don't speak always the same. Now today we have conditionals, and it is part of the advanced English course. That's why you have to listen to it very carefully. I have already given you notes, and in the notes you might have read the definitions, and I have answered all the questions that which are possible questions on the topic of conditionals. Why it is called conditional? Because one part of the sentence is attached to the other part of the sentence. That's why you have to clarify that if I get this, then I will get that. So this combination is called conditional. There are four types of conditionals. We have zero conditional, we have first conditional, second conditional, and third conditional. So please make a comment that there are four types of conditional: zero conditional, first conditional, second conditional, and uh, third conditional. First, you should know that there are four structures that we have to understand. Then we imagine and we create new situations, and we create new ideas, and then we put those ideas in this basic structure. So the basic structure you have to understand. So please make a comment that there are four conditionals, and then I will be explaining each conditional separately.
So please make okay. And I saw the first comment. There are four types of condition. There are four types of conditional. Number one, zero conditional. Number two, first. Number three, second. Number four, third. So there are four types of conditionals. This one point is clear. पहला पॉइंट ये क्लियर है कि कंडीशनल जो है वो चार किस्म के है, तो आपको ये जहन में क्लियर होना चाहिए. नाउ नंबर वन इज जीरो कंडीशनल. नाउ जीरो कंडीशनल मीन्स नो कंडीशनल, but still there is conditional. That's why it is called zero conditional. No conditional, but still there is conditional. That's why we call it zero conditional. Zero conditional is about universal truths, habits, routines. Technically, we call it axiom, AXIOM, axiom. Axiom means self-evident truth. Self-evident truth. That is zero conditional, which is universal truth, general truths, habits, or routines. So, axiomatic expressions, which are clear, which are like universal, which is true, which cannot be false. So for such situations, we use zero conditional. And this is a very simple structure, if plus present. If plus present. Because present simple tense or present indefinite tense, that is always used for universal truths, habits, and routines, which are always axiomatic, which is always axiom, self-evident truth. Self ज़ात, evident ज़ाहिर, जो बज़ाहिर जो है वो चीज़ क्लियर होती है. So that is called self-evident truth. For example, if I say, if you heat water to 100 centigrade, it boils. It boils. If you heat water to 100 centigrade, comma, it boils. So yes, there is no condition. If you make it a condition or you don't make it a condition, but this is a reality कि अगर आप 100 दर्जे जो है पानी को उबालोगे, पानी को गर्म करोगे, तो वो उबल जाता है. ठीक है ना, ये एक आम सी बात है, सब लोगों को पता है कि जब पानी आप गर्म कर रहे हैं और 100 दर्जे पे पहुंच जाए तो वो उबलेगा. अगर 7 बजे जो है वो सूरज के निकलने का टाइम है, तो आप इस तरह की जीरो कंडीशनल बना सकते हैं. इफ यू गेट at 7 a.m. you will see the sun. Yeah, the sun rises. If you get up at 7 a.m., comma, the sun rises. अगर आप 7 बजे उठते हैं तो सूरज जो है वो निकलता है. अगर आप उठते हैं तो आप, चूंकि ये अगर आप 7 बजे टाइम है और आप उठते हैं तो ऑटोमेटिकली सन आपको निकलता हुआ नजर आएगा. सो दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ एंड इट इज जीरो कंडीशनल. मतलब ये शर्त का मतलब क्या है कि या ये या वो, लेकिन ये शर्त नहीं है, क्योंकि तुम अगर मानते हो या नहीं मानते, लेकिन ये काम होगा. ठीक है ना, इसमें अगर हम इफ निकाले भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, वाटर बॉइल्स, water heat is 100 centigrade and it is boiling. अगर आप if निकाले भी, कंडीशनल निकाले, तो फिर भी वो चीज चेंज नहीं होती, क्योंकि वो हैबिट है, वो ट्रुथ है, वो चेंज नहीं होता. सो दिस इज, अब ये जो अब्दुल गफार ने लिखा है, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो ये कॉमन सेंटेंस है, ये कंडीशनल नहीं है. लेकिन इससे आप जीरो कंडीशनल बना सकते हैं, जिसमें जीरो, इसमें एफ होगा, लेकिन चूंकि वो ऑलरेडी रियल है तो इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता.
और अब्दुल गफ्फार साहब, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो है ये प्रॉपर नाउन्स है, तो इसका जो ई और डब्ल्यू का डब्ल्यू जो है वो कैपिटल लेकर जाता है। ये बेसिक्स है, ये राइटिंग का बेसिक्स है, ABC है कि प्रॉपर नाउन का पहला लेटर जो है वो बड़ा होता है, कैपिटल होता है। अपनी आदत बनाओ। सो नंबर 2 इज फर्स्ट कंडीशनल। नाउ फर्स्ट कंडीशनल इज अ रियल कंडीशनल। वो जीरो कंडीशनल जो है वो रियल कंडीशनल नहीं है, वो शर्त है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से वो जीरो है, चूंकि इफ उसमें आता है, इस वजह से उसको कंडीशनल बनाया गया है। फर्स्ट कंडीशनल इज दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर, समथिंग इज पॉसिबल इन द फ्यूचर, सम इवेंट इज पॉसिबल इन द फ्यूचर। तो फर्स्ट कंडीशनल जो है ये फ्यूचर के इम्कान के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए होता है। If I win the lottery, comma, I will buy a new car. If I win the lottery, comma, I will buy a new car. अब ये एक रियल कंडीशनल है, जीरो नहीं है, क्योंकि लॉटरी मिलेगा तो गाड़ी खरीदोगे तो ये कंडीशनल है। ये फर्स्ट इसलिए है कि इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो प्रेजेंट है और सेकंड पार्ट जो है वो फ्यूचर है, लेकिन ये कंडीशनल जरूर है। सो इफ आई विन द लॉटरी, कामा, आई विल बाय अ कार। इफ आई वर्क हार्ड, आई विल पास द एग्जामिनेशन। इफ आई गो टू मार्केट, आई विल बाय fruits and vegetable. If I attend Naeem Khan's class, I will learn about conditionals. तो इस स्ट्रक्चर में आप हजार और चीजें डाल सकते हैं। पहला प्रेजेंट होता है, सेकंड जो है वो फ्यूचर होता है। फर्स्ट कंडीशनल इसलिए है कि ये सिंपल कंडीशनल है और ये जो है हम रूटीन में यूज करते हैं। इफ आई, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रेजेंट टेंस, विल वो जो है फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर है। सो प्लीज मेक सम ऑफ योर ओन एग्जांपल्स फॉर द फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल के अपने कोई एग्जांपल्स बनाएं। मैंने आपको बेहतरीन नोट्स दिए हैं, तो वो आप उसको पढ़े। इफ पाकिस्तान सस्टेन्स इट्स डेवलपमेंट, it will be in the list of developed countries in the future. हाँ ठीक है, it will be in the list of developed countries, बस full stop। in the future की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर इसको बहुत नापसंद करता है, इसको कहते हैं redundancy, unnecessary repetition। if Pakistan lose the match, it will be out of the World Cup। हाँ, if I work hard, I will top the exam। if you cheat, nobody will trust you। if Pakistan win the match, it will go to the final। तो ये जो है सारे, ये क्या है, ये फर्स्ट कंडीशनल्स है। नाउ सेकंड कंडीशनल, जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ये कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। Second conditional is hypothetical situations in the future, in the present or future। Hypothetical situations in present or future। Hypothesis, hypothetical, hypothesis is noun, hypothetical is adjective। मफरूजा, तो मफरूजा वाला सिचुएशन कि बंदा फर्ज करे एक चीज, वो श्योर नहीं है, फर्जी चीज है। सो hypothetical situation in present or future। and another role of this conditional is regrets। regret, when we have remorse or regret। remorse means repentance। remorse, regret, repentance, पशीमानी। तो पशीमानी के लिए भी ये कंडीशनल हम यूज करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, रिमोर्स, REMORSE, रिमोर्स, रिपेंटेंस और रिग्रेट, पशीमानी।
Second hypothetical situation in present or future or regrets. So यह सिंपल पास्ट आएगा. फर्स्ट कंडीशनल में सिंपल प्रेजेंट था और सेकंड कंडीशनल में सिंपल पास्ट होता है. इफ आई हैड मोर मनी कॉमा आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड. आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड. इफ आई हैड मोर मनी, अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते, मेरे पास ज्यादा दौलत होती, आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड. I would buy a latest car. I would buy a beautiful house. So this is a hypothesis, hypothetical situation. Hypothetical. मफरूजी. पैसा होगा तो मैं करूंगा, पैसा नहीं है तो क्या करूंगा. So this is a second conditional. If I were you, I would never miss any class of Naeem Khan. If I were you, अगर मैं आपकी जगह होता, तो ये एक किस्म का रिग्रेट भी है कि क्योंकि मैं आपकी जगह नहीं हूं तो मुझे परेशानी है, तो इस वजह से प्रॉब्लम है. सो सेकंड कंडीशनल जो है वो क्या है, हिपोथेटिकल सिचुएशन, मफरूजी हालात. इसमें पहला जो होता है वो पास्ट होता है, सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, और दूसरा जो होता है उसमें वुड होता है, वुड. ओके. इफ आई हैड मोर मनी आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड. इफ आई वर यू आई वुड buy a new car. Now the final conditional is third conditional. Third conditional is again hypothetical situation, but it is in the past. अब जो हमारे मफरूजे होते हैं या रिग्रेट्स होते हैं या ख्वाहिशात होते हैं, तो या ये मुस्तकबिल के लिए होते हैं या माजी के लिए होते हैं. अगर माजी में इस तरह करता तो ये ना होता, तो इस तरह के हालात के लिए फिर हम वी यूज, अगर पास्ट है तो थर्ड कंडीशनल, ठीक है. फ्यूचर है, प्रेजेंट है, तो फिर वो है पास्ट उसका पार्ट, लेकिन उसका एप्लीकेशन जो है वो प्रेजेंट पे, फ्यूचर पे है. पर अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं गाड़ी खरीदता, तो ये फ्यूचर में मैं खरीदता. अब माजी में मुझे रिग्रेट है, माजी में हिपोथेटिकल सिचुएशन है, तो यहां हम जो है हैड यूज करते हैं. इफ आई हैड स्टडीड, हैड स्टडीड जो है ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस. इफ आई हैड स्टडीड हार्डर कामा I would have passed the examination. सेकंड कंडीशन में सिर्फ वुड था और सिर्फ सिंपल पास्ट था. थर्ड कंडीशनल में पास्ट परफेक्ट टेंस है और आगे जो है वो वुड हैव है, वुड हैव. इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन. If I had come to your home, I would have got the latest version of the program. So these are the four conditionals. Let me revise it, repeat it. Number one is zero conditional, which is totally universal truth, habit. जो आम हैबिट होता है, जो हर वक्त होता रहता है, उसमें कंडीशन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इफ लगाते हैं, इस वजह से उसको कंडीशनल कहते हैं. चूंकि कंडीशनल की जरूरत नहीं है तो इस वजह से उसको जीरो कहते हैं, लेकिन होता वो कंडीशनल है. सो दैट इज जीरो कंडीशनल. देन फर्स्ट कंडीशनल.
फर्स्ट कंडीशन में क्या है? पॉसिबल सिचुएशन इन द फ्यूचर। इफ आई विन द लॉटरी आई विल बाय अ न्यू कार। तो ये प्रेजेंट फ्यूचर है, प्रेजेंट फ्यूचर। सेकंड कंडीशनल जो है वो भी हिपोथेसिस है, और थर्ड कंडीशनल जो है ये भी हिपोथेसिस है। दोनों हिपोथेसिस है, लेकिन सेकंड जो है वो जरा सिंपल है, इस वजह से उसमें सिंपल पास्ट होता है। और थर्ड जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इस वजह से उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। सेकंड में आखिर में सिर्फ वुड होता है, और थर्ड में आखिर में वुड के साथ हैव भी होता है। तो ये जो कंडीशनल्स है, ये कंडीशनल जो है इसमें एक तो प्रेजेंट टेंस है, फिर फ्यूचर टेंस है, फिर जो है पास्ट और वुड है, फिर पास्ट परफेक्ट और वुड है। तो ये थोड़ा सा आपको ड्रिल करना पड़ेगा। ड्रिल का मतलब ये है कि आपको अलहदा बैठ के नोट्स को पढ़ के इस लेक्चर को दोबारा सुन के और आप अपना कलम पेन उठाए और ड्रिल करें, ड्रिल। ठीक है, उस अगर क्लास में आपकी प्रेशर हो या जल्दी हो तो इसको बार बार ड्रिल करें। जिस तरह आपने एक्सरसाइज किया ना, आई गो ही गोज, आई गो ही गोज, तो ये आपसे गलती नहीं होता क्योंकि आपने बार बार किया है। सो यू हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन alone so that you can get the practice. My tip is that when you read the notes and there are so many examples, तो उन एग्जाम्पल्स में अपनी चीजें फिट करो। ठीक है, अगर वहां डेविड लिखा है तो आप अहमद लगाओ, उसमें अगर राइट लिखा है तो आप रीड लगाओ। ठीक है ना, उसके वर्ब्स चेंज करो, प्रोनाउन चेंज करो, स्ट्रक्चर याद करो और अपने एग्जाम्पल्स बनाओ। सो दिस वे यू विल बी एबल टू get a complete command on the four conditionals. Especially the third conditional is a little complicated, but if you just simply remember that the first part is past perfect tense, had studied, had gone, had come, had traveled, had read, had written, that is first part. And the second part is would have. If I had written a letter, you would have received it. So had written, would have. Had written, would have. जो second conditional है, that is simple past. That is if I were, if I ate, if I wrote. So that is simple past. And the other is simple would. If I wrote a letter, you would read it. If I had written a letter, you would have read the letter. So this exercise you have to do a lot of time. If I were the Prime Minister of Pakistan, Haris Jamari, not a Prime Minister. नट आप सईद अहमद कह रहे हैं जी उर्दू बोलो, एक कभी कहते सिर्फ अंग्रेजी बोलो, तो ठीक है मैं उर्दू भी बोलता हूं। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और प्राइम मिनिस्टर जो है ये बहुत बड़ी चीज होती है। इमरान खान ने इसके लिए कितनी जेलें काट रहा है, नवाज शरीफ जो है उसके लिए क्या क्या किया है, तो ये प्रॉपर नाउन है। तो इसके पी और एम कैपिटल लिखा करें प्लीज, इतना उसको इज्जत दो कि ये प्राइम मिनिस्टर का पी और एम जो है वो कैपिटल हो। आप लोग थोड़ा सा जो है ना कॉन्शियस हो जाए, मतलब अपनी शऊर को जगाए। जब आप अंग्रेजी लिखते हैं तो लेजी बंदा अंग्रेजी नहीं लिख सकता, क्योंकि अंग्रेजी में हर वक्त आपको अलर्ट होना पड़ता है। हर जो है ना स्टेज पे आपसे गलती हो सकती है, तो हर वक्त आपको अलर्ट रहना पड़ता है। लेजी बंदा, सोया हुआ बंदा, अनकॉन्शियस बंदा जो है वो अंग्रेजी नहीं लिख सकता। ये लैंग्वेज मुश्किल जबान है। हमारी जो तरबियत है वो उर्दू वगैरह में हुई है। उर्दू जो है वो सारी एक जैसे लिखी जाती है। वो वजीर आजम है या चपड़ासी है तो दोनों को एक जैसे लिखा जाता है। इंग्लिश में इस तरह नहीं है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज इंग्लिश। सो इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आई वुड इरेडिकेट द करप्शन।
बिल्कुल। वर चूंकि पास्ट है, सिंपल पास्ट, तो आगे वुड लगेगा। अगर ये है कि इफ आई हैड सर्व्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आई वुड हैव एराडिकेटेड करप्शन, तो ये सेंटेंस फिर उस तरह चेंज होगा, स्ट्रक्चर आपको याद होगा। तो थर्ड कंडीशनल ये है कि ये इसका पहला हिस्सा जो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है? आई हैड गॉन, आई हैड स्टडीड, आई हैड ट्रेवल्ड, आई हैड रिटन, ये पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट होता है वुड हैव होता है, वुड हैव। इफ आई हैड गॉन टू इस्लामाबाद आई वुड हैव सीन फैसल मास्क, तो वुड हैव सेकंड पार्ट, और फर्स्ट पार्ट क्या है? हैड गॉन, हैड स्टडीड, हैड रिटन, हैड टॉक्ड, हैड टोल्ड, जो भी पास्ट परफेक्ट है। तो पहला पास्ट परफेक्ट, दूसरा जो है वो वुड हैव। सेकंड कंडीशन में पहला पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, एट, रोड, वेंट, एंड सेकंड इज वुड, ओनली वुड। थर्ड कंडीशन सेंटेंस इन उर्दू। हाँ, उर्दू जो है ये भी प्रॉपर नाउन है, मेहरबानी करो। उर्दू क्या है? प्रॉपर नाउन है। मैं आपको हाथ जोड़ पकड़ता हूं, ठीक है, आपके लिए दुआ करता हूं। क्या करूं मैं कि उर्दू जो है ये प्रॉपर नाउन है, तो इसका यू जो है वो कैपिटल लिखा करे, स्मॉल मत लिखा करे। अपनी हैबिट बनाए, अपने आप को चेंज करे, प्रोफेशनल बन जाए कि मैं कभी भी गलती नहीं करूंगा। मतलब ये तो कोई गलती नहीं है ना। अब उर्दू है, असलम है, हमीद है, आयशा है, फातिमा है, तो ये तो प्रॉपर नाउन्स है ना। तो इसका तर्जुमा ये है कि मसलन अगर मैं ये कहता हूं कि इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास द एग्जामिनेशन। अगर मैं स्टडी, मुतालिया कर चुका होता तो मैं इम्तिहान को पास कर चुका होता, ठीक है। तो ये पास परफेक्ट है। पास परफेक्ट उर्दू में कैसे होता है? आई हैड गॉन, मैं जा चुका था। इफ आई हैड स्टडीड, अगर मैं स्टडी कर चुका था। आई वुड हैव पास द एग्जाम, तो मैं इम्तिहान को पास कर लेता या पास कर चुका था, कर लेता ज्यादा बेहतर है। अब उर्दू का चूंकि ये इतना कहानी नहीं है, ये पास कंडीशनल्स वगैरह, उर्दू में भी शर्तिया जुमले तो होते हैं, लेकिन इतना हमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इंग्लिश का स्ट्रक्चर यू हैव टू अंडरस्टैंड। So all the best guys, take care, see you now in the next class. Please do your practice, और अपना प्रैक्टिस जो है सेफ टू में मेरे साथ भी शेयर करते जाए। Now see you in IR and then philosophy. अगर आपके ये दोनों सब्जेक्ट नहीं है तो आप दोनों को अटेंड करें। IR जो है ये करंट अफेयर्स के लिए मस्ट है, और फिलॉसफी जो है वो एसे राइटिंग के लिए मस्ट है। मतलब एसे आप फिलॉसफी के बगैर नहीं लिख सकते। अगर आपका माइंड क्रिटिकल नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग आपको नहीं आती, लॉजिक आपको नहीं है, तो फिर आप कैसे राइटिंग करोगे?